Run has come to an end at precisely the wrong moment, at the end of a fantastic semi-final, a great game of cricket, but one, of course, which, as the guest, as the host in this chair, as I say, the guest in this chair, I can but share and observe in the disappointment all around us as the game went the wrong way for this nation. However, it's just time to say good evening. Game on Hay. We will be discussing the ups and downs, the whys and wherefores of this game of cricket for a little while yet this evening. Our panel is assembled as ever, looking calm. I'm not quite sure about the underlying emotions, but Sana, it was, whatever else you say, it was an extraordinary game of cricket. Absolutely, it was a great game of cricket. We were glued to our seats till the very end, but unfortunately Pakistan couldn't win it. But otherwise, a great game of cricket. As I say, we'll have a chance to look at all the ups and downs, all the whys and wherefores, discuss the moments that might have affected the game most. Give our congratulations, of course, to Australia, who will now meet New Zealand in the final in 3 days' time in Dubai at the same ground. Let's just have a look back then at the cards. Let's just see the match summary to confirm the result here. Pakistan lost the toss. Australia, to no one's surprise, put them into bat first. 176 for 4 was, I'd say, a pretty good score, to be honest. Slightly more than maybe it might have been expected. Certainly slightly above par. Mohammad Rizwan outstanding with his 67. Fakhar Zaman finding form at just the right time. 55 not out from 32. Babar Azam started so very well, 39 from 34. Zampa was outstanding actually, 1 for 22 from his 4. अटैक किया पाकिस्तान ने 49 रन्स लिए उनके 4 ओवर से. उसके बाद मैक्सवेल ने भी 3 ओवर्स में सिर्फ 20 रन. अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने. कमिंग्स थे, एक विकेट कमिंग्स और जैम्पा को मिली. जैम्पा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई आई थिंक ऑन द पिच. हम बात कर रहे थे नर्व्स की, प्रेशर हैंडलिंग की. आपको लगता है कि वहीं पे मेन डिफरेंस आया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का? नहीं, पहले तो ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद देते हैं. उन्होंने बहुत सी क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग जो आखिर के रन बनाए हैं. अपनी गलतियां बाद में देखते हैं, लेकिन उनको हमें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. और पाकिस्तान ने भी थ्रू आउट द इवेंट बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली है. T20 में होता है, अपने पिछले मैच में इंग्लैंड का भी देखा, 1 ओवर रह गया, आज भी 1 ओवर रह गया. तो ये क्रिकेट के पार्ट है. और अपने शायकीन क्रिकेट से बोलना चाहूँगा कि कुछ प्लेयर परफॉर्म करते हैं, हीरो बन जाते हैं ओवरनाइट, और कुछ प्लेयर नहीं कर पाते. तो उनको बैशिंग मत कीजिएगा सोशल मीडिया पे. हसन अली ने की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है. बहुत अच्छा प्लेयर है, पास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है उसने. तो इसका मतलब नहीं है कि आप राइट ऑफ कर दो उसको. ऐसे क्रिकेट में पार्ट होते रहते हैं. फील्डिंग बिल्कुल डेफिनेटली, और उसमें क्या है, जो प्लेयर अंडर प्रेशर होता है, परफॉर्म नहीं होता और उसके पास बॉल आए तो वो होता है ऐसा, क्योंकि मेंटल तौर पे इतना प्रेजेंट नहीं होता. वो ज़रूरी है कि वहाँ पे होना चाहिए. कैच छूटे, फील्डिंग रन आउट छूटे, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का डे था. बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, स्पेशली स्टॉइनस, जो कि इस इवेंट से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैच को फिनिश करना मैं चाहता हूँ, फिनिशर बनना चाहता हूँ. मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में टॉप ऑर्डर ओपन बैटिंग करते हैं वो अपनी स्टेट से. T20 बिग बैश में यहाँ पे 7 नंबर पे 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया ऑस्ट्रेलियन ने. अभी की बात नहीं, 87 वर्ल्ड कप देखें, 96 में हारे ये, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 2007 का वर्ल्ड कप देखें. डोमिनेट टीम है, और ये नॉकआउट में मेरे ख्याल से जो टीम सबसे बेहतर है वो ऑस्ट्रेलिया है. बिल्कुल. नॉकआउट्स में पाकिस्तान के साथ 4 मैच इससे पहले खेल चुके थे, चारों इन्होंने जीते. आज ये 5वां मैच जीत गए. नॉकआउट्स में बहुत बेहतर है. उमर भाई, अगर हम बात करें इसमें से पॉजिटिव की, जैसे राशिद भाई ने भी कहा, तो सिर्फ एक पॉजिटिव अब नज़र ये आता है कि T20 वर्ल्ड कप का एक नया चैंपियन होगा. न्यूजीलैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम, दोनों कभी वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बन सके इस फॉर्मेट में, जबकि दोनों बड़ी एग्रेसिव टीम्स हैं. तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस है, वेल डिजर्व करते हैं, सही टाइम पे मोमेंटम में आए? पहले तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, और जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला. हमने बड़ा एंजॉय किया जिस तरह लड़कों ने परफॉर्म किया. आई थिंक वन बैड डे, बुरा दिन था आज. बस थोड़े से हम अपने प्लान जो हमारे थे वो राइट टाइम पे हमने एग्जीक्यूट नहीं किए. ऑल दो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और बिल्कुल नया चैंपियन बनने जा रहे हो. और आई थिंक
ओवरऑल क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं भूल गया आपका. मैं कह रही हूँ कि जो ओवरऑल जो नॉकआउट्स में ये दोनों एक तो टीम्स पहली दफा वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगी. ऑस्ट्रेलिया ने एंड पे मोमेंटम लिया, काफी डिजर्व करते हैं इस जगह पे आना, कम बैक किया उन्होंने काफी. मेरा ख्याल से क्रेडिट जाते हैं तो जिस तरह वार्नर ने स्टार्ट लिया, क्योंकि 178 आई थिंक अच्छा बोर्ड पे अच्छा स्कोर था और प्रेशर गेम था, सेमीफाइनल था, नॉकआउट. और जिस तरह उसने एक टोन सेट किया अर्ली ऑन, और फिर जिस तरह मार्च ने आया और उस मोमेंटम को तोड़ने नहीं दिया. ऑल दो बीच में हमारे कुछ अच्छे ओवर भी हुए, हमने कुछ अच्छे आउट भी किए जो उनके कुछ प्लेयर थे स्मिथ से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा प्लेयर है. मैक्सवेल ने रन नहीं किया, लेकिन जिस तरह उसने टोन सेट किया था वार्नर ने, और उसी मोमेंटम को स्टोनिस ने बड़ा ज़बरदस्त कंटिन्यू किया. और फिर जिस तरह फिनिश किया मैथ्यू वेड ने नीचे से बड़ा ज़बरदस्त 17 बॉल पे 41 रन. एक आपके एक पीक के बॉलर को जो वर्ल्ड का टॉप का बॉलर है उसको जिस तरह से लास्ट ओवर में मारे, आई थिंक टोटली क्रेडिट गोज टू मैथ्यू वेड. बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और हार्ड लक पाकिस्तान. बिल्कुल हार्ड लक पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़बरदस्त मैच. अजहर भाई, इनफ रन्स ऑन द बोर्ड आपके लिए, आप समझते हैं? नहीं, आई थिंक इनफ रन ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया को मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली. आई थिंक हम लोगों ने भी, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. एग्जैक्टली सेम सिनारियो जैसे कल मैंने बात की थी कि वही था कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था थ्रू आउट जो है ना. अगर आप देखें ऊपर से डेविड वार्नर की इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मैच में थे. और आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में जो एक पार्टनरशिप वो गेम चेंज, टाइम बहुत शॉर्ट होता है. ये वनडे क्रिकेट नहीं है, टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं है जहाँ पे टाइम ज़्यादा है. तो आपको, जैसे आकिब भाई ने कल भी बात की थी कि जब आपके पास 3 ओवर रह जाते हैं और उसमें 40 रन करना, 45 रन करना आसान होता है. अगर 10 ओवर में ये स्कोर करना हो, 12-13 की एवरेज करनी हो, तो फिर ज़रा मुश्किल होता है. तो ये फिनिशर थे, उन्होंने बहुत आला खेला. ठीक है, उसमें हमारी थोड़ी सी गलतियाँ हुई हमसे. ड्यूरिंग द फील्डिंग हमने जो है ना वो 3 रन आउट मिस किए. उसके बाद जो है आई थिंक जो ओवर था उस वक्त, आपको थोड़ा सा यंग कप्तान है हमारे बाबर जो है ना, वो जाहिर सी बात है वो सीखेंगे. वो हसन अली वाज अ हीरो एंड इंशाल्लाह विल स्टिल बी अ हीरो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. बिल्कुल फॉर मैनी ईयर्स टू कम. लेकिन मसला ये है कि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह नहीं था, विकटें उनको नहीं मिली. तो हमने आज देखा हसन अली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान लाइनअप, उनसे क्या हुआ. दैट शोज के अंडर प्रेशर, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, आपका माइंड जो है ना वो काम सही तरह नहीं करता, तो फिर आपसे मिस्टेक होती हैं. और की मोमेंट में आप जब, ये गेम है की मोमेंट्स विन करने का. वी लॉस्ट द की मोमेंट. Yesterday, England lost the key moment. That's why they were out of the tournament. And well done to New Zealand and well done to Australia for reaching into the final. और हमें जो है ना नया T20 वर्ल्ड कप का विनर मिलेगा. बहुत ही ज़बरदस्त मैसेजेस इधर से आए हैं. मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी. देखिए, हम टीम की मैच्योरिटी के लिए बात करते हैं, पर एज फैंस, एज एनालिस्ट, हम लोगों को भी मैच्योरिटी दिखानी है. और अगर इस वक्त कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो ठीक है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बैशिंग नहीं कर सकते. क्योंकि जितने लोगों की हमने बैशिंग की उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत से लोगों ने प्रूव किया उस चीज़ को रॉन्ग. तो इंशाल्लाह हसन अली भी करेंगे. So the first thing, I agree. Yes, I entirely agree. Okay, so I don't need to translate. And as I said, yes, indeed. Okay, so I don't need to translate. No, we're right. We're here to watch a game of cricket. Yeah. There was obviously a strong allegiance in this room to the home side, and Viv and I were also backing the home side, not just because we happened to be here, but because we felt Pakistan had played such good cricket. They're unbeaten until today, and they looked as though they could do it because they have that talent. And games of cricket go this way. We saw it yesterday, as you say. Games of cricket go this way. And it's, I suppose, ironic or whatever it is, that both games have gone exactly the same way. The side defending appearing to have just enough in hand. And then in the last 3 or 4 overs, everything changes. And both chasing sides win on the final ball of the 19th over. So, Viv, what was the key point for you, do you reckon? Well, first of all, let me say I feel for the cricket fans in Pakistan and around the globe, actually. But this was a magnificent game of cricket. We saw one previously before. And Azhar didn't quite understand everything, but there was some key moments where he said about not winning the most important moments of the game.
And we saw that tonight. Hasan Ali, who have been good in the past, he was the one tonight, who suffered a bit mentally, I guess. But it's all part of the game. I'm sure he'll be back. If I can maybe add some advice to him, that these things do happen. And this should make him a better person moving forward in terms of the things that needs to be done. Sometimes we sit on the sidelines and we see how things look so easy. It's not for the guys on the field who are feeling the moment at that particular time. Okay, just on that alone then, because people will look at the catch that was dropped, and of course, when you're supporting a team and you want that man to catch it, and you see the disappointment of it going down to the ground, Mark's at 0 to 10, how difficult a catch was that? Because he was having to run, he didn't have time to stop and gather himself, so he was still on the run. And that is where we speak of maybe when you're in control of your faculties. I guess he didn't have the best evening with the ball. But here's an opportunity. I believe that if you have your mental faculties in place, it's an opportunity for the guy who would have won the game in the end, especially taking that catch, if you could. Your mind got to be bent on, wow, I haven't bowled that well. Let me try and do something quite important at this moment. It didn't happen. And he suffered dearly for that, and the same guy who was dropped, he was the guy who actually finished the match. Yes, which of course makes you feel infinitely worse. Yes, it makes you feel a little bit worse, but it's all part. How difficult was that catch? Come on, Aki. It wasn't how difficult or how easy it was. About what was going on up here, especially here. Because, it's happened. That's why people say do things at one time. When you're bowling, don't think about your fielding, and when you're fielding, forget what happened when you're bowling. So he was still there. He was disappointed, especially after bowling a no ball. And it's happened. And sometimes if you're not feeling well, I could see from his face when he was bowling after the no ball, he wasn't right. At that time, somebody should go to him and ask him, how do you feel? Do you feel confident? If not, feel somewhere else. Because in this game, it's a complete repeat of yesterday's game. England was winning 35 overs and lost in last 5. And today, after scoring 176, Pakistan never looked in trouble when they were batting, and they were in control in first 6 overs, getting 2 wickets. Well controlled within the phase from 7 to 15 because Shadab bowled really well. Really well, and then it's come to about 62 in 5. Then where you need your bowlers to choose the right movements, right ball at the right spot. And it took us 24 hours. What felt to you last night? What we have felt. Let's not forget that. Let's not bring this back to England quite so soon. Hasan Ali have personally been a star in the past. Yeah. I've seen him, and those of us who have watched him over the years, he puts his body on the line most times. We would have seen him take some brilliant catches. Tonight, as we all spoke about the fact that those key moments, we saw it with England last night as well. And David, I'm sorry about that. A ball dropping between 2 guys, not committing themselves. So it's not just Hasan Ali. It happens to almost every cricketer who doesn't have their faculty at the right time. He's a very out on the field. brave kid. Every time there is tough time, he will go and ask for it. I'll do it. But sometimes it's happened. That thing you were talking about, someone coming up to him at the right moment and saying, right, just steady yourself, don't worry about me. It happened after the catch, after the drop with Shoaib Malik. Which is showing actually huge experience and compassion and also gumption, because he realised that man needed just someone to say, look, put that behind you, whatever. I don't know what he said. None of us can tell yet what he said. But that was a very good thing. Well, it was a very good thing to do. And okay, by then I guess it is too late. Yes, of course. I mean, this is what team is all about. When your mates are down, that's when you need to pick them up. Everyone is there in your good times. It's when you have the bad times that you need support. Okay, well, everyone, up we come. It's fine. Okay, Yeah, it's fine. it'll be fine. It's fine. It'll be fine. The sun will come up tomorrow. I'll just put the point here in Urdu.
यू नो अगर जैसे आज हसन का दिन था, अगर हम देखें तो बेन स्टोक्स, रिमेंबर द नेम, ओके, ही वेंट फॉर 4 sixes, ओके, and after that, you know, you learn from your mistake. After that, you know, Ben Stokes become a #1 player in the world in all-rounder. Okay, same thing happened to Broad. Stuart Broad. Okay? Sorry, Yeah. I'm putting That's good. England No, players, yeah. but see where is Broad right now? You know, one of the best bowler in red ball cricket. So these things happen to players. मैं सिर्फ अपने लोगों को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी होता है कि कोई इस तरह की परफॉर्मेंस होती है और हम अपने लोगों को नीचे गिरा देते हैं। हमें अपने लोगों को नीचे नहीं गिराना। हसन अली, ये टीम जो है ना, इस टूर्नामेंट में हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह के हमारे सर्कमस्टांसेस थे, जिस तरह की हमारी चीज़ें हुई, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस टीम ने पूरे पाकिस्तान को एक साथ इकट्ठा कर दिया। ये पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हमें इन्हें बैक करना है। बहुत जबरदस्त बात। ये वही हसन अली है जिसने 2-3 साल पहले जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी हमें जिताई है। तो जिस तरह अली मैंने कहा बैड डे था पाकिस्तान टीम का, हसन अली का बैड डे था। ऐसी कोई बात नहीं है, पास में उसकी जो परफॉर्मेंस है हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। आ जाता है प्लेयर पे, कोई जानबूझ के नहीं करता कि मैं कैच ड्रॉप करूं या अच्छी बॉलिंग ना करूं, क्योंकि इस एंड ऑफ द डे ग्रेट ऑनर होता है, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर वो आया भी है तो उसकी परफॉर्मेंसेज है, मेरे ख्याल से उसको हमें बैक करना चाहिए। मुश्किल टाइम पे हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। You mentioned Ben Stokes and where he went, because that was certainly a dampener on his career, bowling that final over against Carlos Bradford. You may have the one who lost his mind that day. He went from here to there. Where's Carlos Bradford today? You know, so it goes to show you how things can change, and we've got to accept sometimes the good with the bad. Indeed. Right. On that note, we will be taking a break in a moment. We've got lots to talk about tonight. So many performances that have affected the game of cricket that has obviously sadly lost Pakistan their place in the final. But we'll be right back with you. Game on Hay.